Hello and welcome to each and every one of you to Stevenson Makes It Easy, and I will promise I'll do my best to make whatever is being taught in the next few minutes a little bit more easier for you to digest. Okay, before I get started with my task for the day, a very quick reminder: you can connect with us besides YouTube through our Facebook page, through the Instagram ID as well as the Twitter handle. Besides Accountancy, if something does come up in my mind, I will make sure that I post there. Maybe it will be useful to you also. Definitely the Telegram channel which is given above is useful to you because constant updates about the lectures that are posted on the YouTube platform, whatever is posted in that, whatever is solved and whatever is the question and answer that is being discussed in a PDF format at the end of that particular chapter, as well as in the description of that particular video, will be shared. So if you want to download the PDF, which you should, because the explanation of the question and answer as a reference should be available to you for future practice purposes, please join the Telegram channel given above. If for some reason you missed out the previous lecture, you can always watch that lecture through the card that is being given above. So the link is continued. If the book is to be purchased, from which the question and answers are being discussed and the explanation being provided, purchase link is being provided in the description below. If till date you have not subscribed to this channel, then अच्छे काम में देरी क्यों करनी है? Okay, please do subscribe to the channel. Encourage your friends also to do it and press the bell icon so that YouTube sends you a notification, okay, of the video which is being uploaded. Okay, let me get started with the new task for today, and today onwards it is going to be a series of lectures which is going to be connected to this particular topic. What is that? We have done introduction to partnership. I have thought you have learned partners capital account, fixed capital method, fluctuating capital method. वो हो गया, वो मैं repeat भी नहीं कर रहा. Today onwards I am starting with partnership final accounts. Okay, what is final accounts? Don't worry, I will get into it. But one chapter, connected to your previous year, which was completely digital, online, which will have a very big impact on your 12th standard, because that is the very first chapter which I am discussing. It is in this chapter that फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के जितने कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं और मैंने सिखाए हैं वो यहाँ पे यूज होगा. दिस इज वन कंपल्सरी चैप्टर ऑफ विच वन क्वेश्चन एंड ओनली वन क्वेश्चन, एंड यू डोंट गेट एनी ऑप्शंस, इज ऑलवेज आस्क्ड फॉर द पास्ट सो मेनी years in the board examination. Very quickly, because the chapter genuinely is इतना नहीं, बहुत बड़ा है. There is a lot of variety that this particular chapter within it encompasses. इसके अंदर इतनी variety आती है, and it is very important that if not the full chapter, maximum आपको आना चाहिए. क्यों? Because जो आने वाले approximately 4 chapters है, वो पूरी तरह से completely depend upon the knowledge of you being acquired in this chapter of partnership final accounts. Because it is so lengthy, what I will do, I will not be in a hurry, घाई बैल नहीं, वो वाला नहीं, in a hurry to complete this chapter. तो करूँगा क्या मैं? आराम से. Because not my completion of more problems, but your understanding of what has been taught, that is more important. आपकी समझदारी जो यहाँ पे पढ़ाया गया है वो पहले पायदान पर आता है. सेकेंड आता है मैंने 20-30 क्वेश्चन किए हैं कि नहीं. ओके, अगर मैं 30 क्वेश्चन करता हूँ, 30, तुमको 3 भी समझ में नहीं आया, व्हाट इज द यूज? ओके, सो आई विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द अंडरस्टैंडिंग, माई एक्सप्लेनेशन विच लीड्स टू योर अंडरस्टैंडिंग. वेरी क्विकली, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए. ओके, फर्स्टली, डू यू सॉल्व फाइनल अकाउंट्स एट द स्टार्ट? ऐसे नहीं होता. फाइनल अकाउंट्स फाइनल में ही होता है. तो एट द स्टार्ट होता क्या है?
जर्नल, लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करके कुछ बनता है, ट्रायल बैलेंस से in which you get asset, liability, income, expense, one prepares something called as final accounts, in which you prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. I'll show you. Secondly, final accounts में कौन सा ईयर फॉलो करना है, ईयर, ये वाला नहीं, साल, ओके, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट, ओके, कहता है, पार्टनरशिप एक्ट नहीं, वो अलग है, ओके, कि जो भी बिजनेस होते हैं दे मस्ट फॉलो अ फाइनेंशियल ईयर, पैसे का साल, ओके। तो फाइनेंशियल ईयर इज ऑलवेज फ्रॉम 1st April to 31st March. So you forget about Happy New Year, January, नहीं, वो छोड़ो. In accountancy, normally we don't discuss Happy New Year and 31st of December, midnight mass, नहीं. We discuss 1st April, 31st March. Okay, so that is called as a financial year. So final accounts का हर problem 12 महीने के लिए होता है, and that 12 months start on 1st April and end on 31st March, just like the problems of FYGC, the previous standard. Okay, why do we prepare final accounts? Need, जरूरत क्या है? अरे, otherwise you will not be able to find out gross profit. You cannot find out factory में कितना खर्चा हुआ. You cannot find out net profit. You cannot find out office में कितना खर्चा हुआ. You don't know कितने डेटर्स है, कस्टमर्स. You don't know कितने सप्लायर है, क्रेडिटर, कितना पैसा लेने का है, रिसीवेबल, कितना पैसा देने का है, पेएबल. अरे, there are so many questions that a businessman owner requires the answer for, and unfortunately the chapters that you learn normally in accounts, journal, ledger, they don't give you answers for all of these. Final accounts does. Most important, it helps a businessman find out profit or loss, gross profit, gross loss, net profit, net loss, but profit or loss. And every businessman, अगर आप रास्ते पे इंटरव्यू करने निकले, ओके, एंड यू आस्क इवन द रोड साइड वाला वेंडर, भाजी वाला, आइसक्रीम वाला, ओके, उनको भी अगर आप पूछोगे, भाई साहब आप ये जो बिजनेस कर रहे हो ना, ये दुनियादारी के लिए शुरू किया है, उन लोग खुद बोलेगा, सर दुनियादारी नहीं, मेरे को मेरा पेट भरना है, मेरे परिवार का पेट भरना है. मैंने ये बिजनेस फायदा, इनकम, प्रॉफिट के लिए शुरू किया है. नोबडी विल से मेरे को तो लॉस करना था, नुकसान करना था, मेरे पैसे मेरे को लुटाने थे. नोबडी विल से. अगर कोई बोलेगा तो उसको थोड़ा बाजू में लेके डोज देना, बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रहेगा. सो आई रिपीट, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू डू हिज बिजनेस फॉर प्रॉफिट. सो दे वांट टू नो प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया. The only chapter that helps them do that is final accounts. Therefore, obviously, वो उनका मेन टारगेट है, फर्स्ट क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है. कितना कमाना है? पहले साल में 1 लाख, फिर 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़. देयर इज नो लिमिट टू प्रॉफिट कमाना, बिकॉज एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो, एंड दिस चैप्टर हेल्प्स हिम फाइंड whether he is growing in his business or not. Okay, so that's one of the purposes. Steps ऊपर दिए हैं, कौन सा ईयर आपको फॉलो करना है, साल, और क्यों आप लोग फाइनल अकाउंट्स सीखने वाले हो. ओके, नाउ फाइनल अकाउंट्स हैज मेनी पार्ट्स. व्हाट यू सी behind me is something called as trading account. This is part 1. Okay, so the solution of final accounts will be prepared by you on 4 pages. 1, 2, 3, 4. Okay, चारों पेज पे कुछ ना कुछ अलग आएगा. फर्स्ट पेज पे आएगा ये ट्रेडिंग अकाउंट. मतलब it's not simple, there's a lot of matter in trading account. I'll come to that. Next is going to be even lengthy. What is that account?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो मतलब आप थोड़ा जूम इन करोगे तो भी आपको देखने में मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज देर इज सो मेनी डेबिट्स एंड देर आर सो मेनी क्रेडिट्स. ओके, सो वन पेज विल बी फॉर ट्रेडिंग अकाउंट, वन पेज विल बी फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर लिखा है. देन नेक्स्ट पेज विल बी फॉर समथिंग दैट यू नो व्हाट, कैपिटल अकाउंट. एंड इन दैट देर आर मेनी थिंग्स जो आपने सुना है विच यू आर वेरी गुड एट. क्यों? प्रैक्टिस किया ना पिछले 4 लेक्चर से. सैलरी का कैलकुलेशन, कमीशन का कैलकुलेशन, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. आई रिपीट, मे बी मेनी ऑफ यू who are watching me for the first time, who are listening to final accounts for the first time and trying to understand. Maybe many of you may say, sir, trading account पता नहीं क्या बताया आपने, profit and loss account, sir, I have no idea what is that. हाँ, but if you did attend the last 4 lectures, many of you will be super confident about, sir, ये capital account पता है, उसके अंदर जो भी लिखा है ना सर, वो सब मैंने solve किया है. Quite simple रे. In 3-4 lectures, you got comfortable with the concept of capital account. Similarly, अगर आप आने वाले lectures में ध्यान दोगे, you will get comfortable with trading, profit and loss account and balance sheet, जो इसके बाद है. There are 4 parts to final accounts: trading account, profit and loss account, partners account. Now that can be partners capital or partners current account. Okay, and lastly balance sheet. Balance sheet भी कोई account नहीं है, वो important है. Account नहीं है. There is no debit and credit. There is no to and by. In balance sheet 2 things are written. 1 liability, 1 asset. आपको ऐसे याद रखना है. Liability, this one, everyone. Why is it on the left side? Liability, because in the business, दुकान के अंदर business, okay, पहले liability आता है. Liability is called as sources of funds. I repeat, please understand what am I saying. Sources of funds मतलब पैसा कहाँ कहाँ से आया. Liability shows you that. Very simple. If you start a new business, आपने एक नया दुकान स्टार्ट किया, आपको क्या लगता है कहाँ से पैसा आएगा? ओनर से, मालिक से, मालकिन से, प्रोप्राइटर से, बराबर, बिजनेसमैन से, दुकानदार से. दुकान उसका है तो पैसे उसी से तो आएंगे. पहले कैपिटल आता है. देन इफ यू डोंट हैव मनी, ओनर डजंट हैज मनी, देन वेयर डू यू गो? देन यू विल गो टू द बैंक. चाचा चाची, नाना नानी, यू विल गो टू रिश्तेदार एंड टेक मनी, बोरो मनी, लोन. लाइबिलिटी साइड पे क्या आता है? पैसा कहाँ से आया. एंड एसेट साइड पे क्या आता है? पैसा कहाँ पे खर्चा किया. वेयर डू यू स्पेंड मनी? ओके, नॉर्मली पहले आप मेहनत करते हो. ओके, यू गो टू अ प्लेस टू वर्क एंड यू गेट सैलरी. आप पैसा जमा करते हो, जमा. एंड देन यू डिसाइड, अच्छा मेरे को नया मोबाइल चाहिए, मेरे को नया स्मार्ट वॉच चाहिए एज अ टीनेजर, मेरे को नए कपड़े चाहिए, मेरे को यहाँ घूमने को जाने का है, मेरे को अंडमान एंड निकोबार में जाने का है, मालदीव्स में. यू स्पेंड लेटर. तो जहाँ पे खर्चा करते हो, दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स. देयर आर 4 पार्ट्स. आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ एवरीथिंग. वेरी क्विकली लेट मी जस्ट गिव नेम्स टू दिस, क्योंकि आज मैं सिर्फ पार्ट 1 पे कॉन्सेंट्रेट करूँगा. ओके, डोंट वरी, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग लेक्चर, बिकॉज द अटेंशन स्पैन, आपका ध्यान का जो समय होता है, वो ऑनलाइन इतना ज़्यादा नहीं होता. सो आई रिपीट माई सेल्फ, आई विल टू द पॉइंट दैट आपका ध्यान है, उस ध्यान का मैं फ़ायदा लेता हूँ और उस ध्यान में जो आपको सिखा सकता हूँ उतना सिखाता हूँ. वी ऑब्वियसली हैव अ नेक्स्ट लेक्चर टू ऑलवेज continue. Okay, so the first account which I showed you was what account? Trading account. आपको क्या याद रखना है? Trading का मतलब है factory and godown, because the word trading ये ऐसा difficult word नहीं है. Okay, but जिन लोगों को, those students who have never heard about final accounts, या सुना था बट इतना सीरियसली पढ़ाई नहीं किया, उनको मैं एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ कि बाबा, एक कंपनी का जो
फैक्ट्री होता है, गोडाउन होता है, फैक्ट्री होगा तो गोडाउन होगा ही होगा, आई शो इट इन सम टाइम, ओके। उसका जो हिसाब किताब होता है, अकाउंट्स में वही करते हो ना हिसाब किताब, वो ये है trading account. There are some debits, well not some, there are a lot, and there are some credits. I will come to the details of debit and credit most probably in the next lecture. So next lecture में I will tell you ये debit में क्यों है, वो credit में क्यों है, and we will even solve a sum only based on trading account. But right now what I want you to remember is trading account का मतलब simple भाषा में क्या होता है, factory and godown, okay. फैक्ट्री में क्या होता है, थोड़ा टाइम दो मैं आपको दिखा देता हूँ, rather than me speaking about it, it's always good this particular environment, video lecture, online lecture, okay, YouTube platform, it can be superbly used, okay. And let me prove it to you in some time. Trading means factory and go down. Then what does profit and loss mean? Hey, that means office and administration. फैक्ट्री एक अलग जगह पे होता है और ऑफिस एक अलग जगह पे होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फैक्ट्री में अलग लोग काम करते हैं, ऑफिस में अलग लोग काम करते हैं, ओके। सो आई रिपीट माई सेल्फ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मीन्स वॉट, ऑफिस का हिसाब किताब, ओके। नॉर्मली देर कैन बी वन ऑफिस बट देर कैन बी मैनी मैनी शोरूम्स, बट ऑल दो शोरूम्स का जो हिसाब किताब है वो एक सेंट्रल ऑफिस में होगा, एक ही ऑफिस है, वो पूरा बॉम्बे को हैंडल करेगा, पूरा इंडिया को हैंडल करेगा, ओके। सो प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट मैंने क्या दिखाया, पार्टनर का अकाउंट। हाँ, तो ये पार्टनर की कहानी, पार्टनर ने क्या लिया, पार्टनर ने क्या दिया, उस पर क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया, उसका सैलरी कितना है, उसका, अरे पूरा रामायण, पूरा स्टोरी पार्टनर का इज रिटन इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, विच आई एम एक्चुअली कॉन्फिडेंट दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस वन अकाउंट। एंड द लास्ट थिंग, बैलेंस शीट में क्या आता है, वेल बैलेंस शीट में भविष्य की कहानी, ऊपर लिखा है फ्यूचर की कहानी, बिकॉज लाइबिलिटीज जो लेफ्ट में है, व्हाट डज दैट मीन, लाइबिलिटी का मतलब है फ्यूचर में। व्हाट डज द वर्ड फ्यूचर मीन, यू नो दैट, कल की बात हो रही है, ओके। बट फ्यूचर में भला होगा कि बुरा, गुड और बैड। सो द फ्यूचर गुड थिंग्स, अच्छी चीजें, भली चीजें, दे आर रिटन ऑन द एसेट साइड, बट द बुरी चीजें दे आर रिटन ऑन द लाइबिलिटी साइड, ओके। सो आई रिपीट माई सेल्फ, फ्यूचर में एवरी बिजनेसमैन, नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, every one of you, me, you, I am looking at the future. I don't know what will happen, but I have certain plans for the future. कि अच्छा, this YouTube channel should go in what direction? With this YouTube channel, what good, what bad may happen? कुछ सोचा है मैंने फ्यूचर के लिए, आप लोगों ने कुछ सोचा है आपके फ्यूचर के लिए। ए माई 12th स्टैंडर्ड में किधर ध्यान देना है, किधर ध्यान कम देना है, किधर मैं फिजूल वक्त बिताता था, उधर मेरे को टाइम पास कम करना है। यू हैव सम प्लान्स फॉर योर फ्यूचर, ओके। योर मॉम एंड डैड हैव प्लान्स फॉर योर फ्यूचर, ओके। दे हैव सम प्लान्स फॉर द हाउस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एवरीबडी हैज प्लान्स फॉर द फ्यूचर। बिजनेस का फ्यूचर कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट में, और इन द बैलेंस शीट कहाँ अच्छा होगा, कहाँ बुरा होगा, good and the bad, the payable and the receivable, everything is mentioned in this particular balance sheet. And again, I will come to the details of this balance sheet as and when I come to teach this. Today, that's not my plan. मेरा प्लान ऑफिस नहीं है, मेरा प्लान पार्टनर नहीं है, मेरा प्लान फ्यूचर नहीं है, but my plan is to teach the very first thing. What is that? Factory and go down. Because any product, you have to remember कि आप फाइनल अकाउंट्स किसका कर रहे हो, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, कीप दैट माइंड।
trading organization, not trading account, trading organization. What is a trading organization? A organization, a shop, a company which makes a product and sells that product. Okay, हवा नहीं बेचती है. Okay, वो प्रोडक्ट बनाती है और वो प्रोडक्ट बेचती है. तो दैट प्रोडक्ट विच कैन बी एनीथिंग, खाने का होगा, पहनने का होगा, यूज करने का होगा, कुछ भी हो सकता है. इट इज मेड इन अ फैक्ट्री. हवा में तो बनता नहीं है ना. ओके, इट इज मेड फॉर द पास्ट few days. There is a lot of information, a lot of news about O2, O2, O2. What does that mean? Oxygen. Now, if you have seen a cylinder, क्या oxygen that a patient in a hospital is breathing in, pure oxygen, that's in a gaseous state, gas. But in that cylinder, is it in a gaseous state? No, it's in liquid state. Okay, it's medical liquid oxygen. आपको ये समझना है, वो भी हवा नहीं है. इवेंचुअली वो हवा में कन्वर्ट हो जाता है, बट वो हवा नहीं है, वो है लिक्विड फॉर्मेट में. एंड टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, आप अगर वो सिलेंडर विच इज़ अ वेरी बिग थिंग, ओके, एटलीस्ट 4 फीट 5 फीट का आता है, इट्स वेरी हैवी टू, इट्स प्रेशराइज्ड, इट्स वेरी हैवी टू कैरी. तो बाबा वजन बहुत है उसमें, 1-2 आदमी लोग लगेंगे वो उठाने के लिए. जैसे तुम्हारा सिमिलरली यू हैव योर LPG सिलेंडर इज अराउंड 16-18 kgs. अगेन उसके अंदर लिक्विड है. वो बाय द टाइम योर मम्मा ऑन्स द गैस, इट गेट्स कन्वर्टेड थ्रू अ मैकेनिज्म इन गैसियस स्टेट. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, हवा कोई बनाता नहीं है. ओके, आइदर द प्रोडक्ट इज इन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, डेफिनेटली सो. बनता किधर है? फैक्ट्री में बनता है. ओके, सो व्हाट यू सी इन दिस अकाउंट इज व्हाट? एवरीथिंग दैट इज कंपेयर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज व्हाट हैपन्स इन अ फैक्ट्री इज मैन्युफैक्चरिंग. जो मेरे पीछे आपको दिखता है, ये सब जो है कनेक्टेड है एक प्रोडक्ट के, हवा के नहीं, एक प्रोडक्ट के उत्पादन के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ. ये सब डेबिट में जो है वो है डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट, ये अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है. क्रेडिट में आता है क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. बराबर. पहले हम लोग फैक्ट्री पे नजर मारेंगे. ओके, लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स. उसके बाद में हम लोग गोडाउन, बिकॉज ऑफ गोडाउन इज रिक्वायर्ड सेकेंडरी. फर्स्ट यू रिक्वायर अ फैक्ट्री. व्हाट इज अ फैक्ट्री पहले वो समझ लो. लेट मी शो इट टू यू एंड देन यू अंडरस्टैंड कि अच्छा फैक्ट्री में कुछ तो होता है, द रीजन, उसके वजह से गोडाउन की जरूरत पड़ती है. एंड जो होगा फैक्ट्री में, गोडाउन में जो होगा, एवरीथिंग कैनॉट बी ह्यूमनली रिमेंबर्ड. याद नहीं रख सकते. इट हैज टू बी रिकॉर्डेड. एंड वेयर इज इट रिकॉर्डेड? इन अ ट्रेडिंग अकाउंट. सो जस्ट टू शो यू, ऊपर से, व्हाट डू यू सी हियर? यू सी कैरेज इनवर्ड. क्या है कैरेज इनवर्ड? ट्रक का खर्चा. ट्रक आ रहा है, क्या लेकर आ रहा है? ट्रक आ रहा है रॉ मटेरियल लेकर. इफ यू मैन्युफैक्चर आटा, ओके, वो आटे के लिए रॉ मटेरियल लगेगा ना. डिपेंड्स, चावल का भी आटा बनता है, ज्वार का भी आटा बनता है. ओके, सो आई रिपीट माई सेल्फ, आटा जिसका बनाते हो उसको कूटने के लिए, ओके, आपको पीसने के लिए यू रिक्वायर द रॉ मटेरियल. तो वो आएगा ट्रक में. उसको कहते हैं कैरेज इनवर्ड, because it is coming into your shop. This is the same as what was explained to you either by me or by your college teacher in 11th standard. My request is, do pay attention, consider it to be a first time learning for you or consider it to be a revision for you, because there will be some items which you
हैव नॉट डन इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड, बट यहाँ पे मैं वो कवर अप कर दूंगा, एटलीस्ट व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. देन नेक्स्ट, फ्रेट क्या है? I was just telling you, everybody of you know O2. So there were many states which were having a shortfall of oxygen. So they asked other states, आपके पास एक्स्ट्रा है, आपके पास एक्स्ट्रा है, प्लीज सेंड इट टू अस, प्लीज सेंड इट टू अस. ओके, सो मेनी ऑफ देम सेंड इट ऑन स्पेसिफिक ट्रक्स. ओके, उसको नॉर्मल ट्रक्स में भेज नहीं सकते हैं, बिकॉज द सिलेंडर इन विच इट इज स्टोर्ड, इट हैज़ टू बी केप्ट cooled at a very very cold temperature. Okay, ठंडा टेम्परेचर पे इसको रखना पड़ता है. ओके, सो ट्रक्स मंगाए गए, एंड ट्रक के अलावा ओके दोज बिग बिग सिलेंडर्स वर इवन लोडेड ऑन ट्रेन्स एंड दे वर ट्रांसपोर्टेड टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. यहाँ पर भी वो ट्रेन्स में आया. ट्रेन्स में अगर आता है आपका माल तो आप उसे क्या कहोगे? फ्रेट. ओके, सो यू हैव टू पे द रेलवे अथॉरिटीज. चलो ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपका कुछ भी माल रहेगा, एनी रॉ मटेरियल दैट यू यूज, अगर वो ट्रेन से आता है यू हैव टू पे समथिंग टू देम. डॉक चार्जेस, अगर वो पोर्ट पे आता है, एक्चुअली आई गिव द सेम एग्जांपल. जो ऑक्सीजन था वो अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो इट अराइव्ड इन अ ट्रक, it arrived via railways, and there were many other countries that via airways, okay, or via ships send it to India, came at the port. पोर्ट पे आया तो फिर डॉक चार्जेस देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज इन अ शिप, इट हैज टू बी पिक्ड अप. छोटा तो है, इट्स नॉट अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. ओके, कि आपको वो सिलेंडर, दैट सिलेंडर इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग. It weighs a lot. Okay, in that liquefied medical oxygen is kept. हाँ, तो उसका लोडिंग अनलोडिंग खर्चा तो होता है ना, ऑब्वियसली. सो आई रिपीट, अगर एयरपोर्ट पे आया तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा. व्हाट डज वेजेस मीन? ओके, एनी वर्कर जो एक फैक्ट्री में काम करता है, टाइम पास नहीं करता, वो एक प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता है. ओके, I was watching in the process of putting certain clips for you for this particular lecture. I watched a few videos, so I seen the mobile manufacturing process. The beginning of the mobile manufacturing process is machine based, but later on many workers are used for different प्रोसीजर्स. तब जाके एक मोबाइल फैक्ट्री से बन के बाहर आता है. ओके, सो देयर वाज अ वर्कर, जो मैं देख रहा था वीडियो, जो स्क्रीन को टैप कर रहा था. सो मल्टी टच है कि नहीं, स्क्रीन का हर सेक्शन चल रहा है कि नहीं. ओके, वो मशीन से हो सकता है, बट मे बी इट इज़ बेटर अ पर्सन डज इट. तो ह्यूमन टच से वो मालूम पड़ जाता है. तो वर्कर इन अ फैक्ट्री इज पेड अ पगार, दैट इज कॉल्ड एज वेजेस. तो वेजेस एक फैक्ट्री का खर्चा होता है. ओके, इंपोर्ट ड्यूटी, कोल, कोक, नॉट कोको कोला. ओके, उसको कोक कहते कुछ लोग, ये वो वाला नहीं है. गैस, मोटिव पावर, ऑयल. ओके, ये सिर पे लगाने का ऑयल नहीं है, ये मशीन्स में यूज होता है. वाटर, ग्रीस, ऑल ऑफ दीज आर यूज्ड either to run a machine or to make sure the machine runs smoothly. मशीन कहाँ पे उपयोगी होता है? एक फैक्ट्री में यूज होता है. तो अगेन ये फैक्ट्री में ही आपको खर्चा होगा. ग्रीस का खर्चा होगा. वाटर का मतलब बिस्लरी वाटर नहीं है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था. इट इज़ वाटर विच इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि जहाँ पर भी मशीन होगा वहाँ पर कुछ ना कुछ तरह का गैस रिलीज होगा, हार्मफुल लिक्विड रिलीज होगा. उसमें देयर विल बी अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स जो एनवायरनमेंट को हार्मफुल रहेगी. तो दे हैव टू गो थ्रू सर्टन प्रोसीजर्स जहाँ पे द पोल्यूटेंट का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है. इट डजंट हार्म द एनवायरनमेंट, इट डजंट हार्म द क्लाइमेट विच इज आउटसाइड द फैक्ट्री. ओके, all of that you see, I'll come to more details. मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको.
these are things which are connected to what? A factory. So for the past I think कुछ 10 मिनट तक तो मैं बोलते आ रहा हूँ आपको factory factory factory. Let me give you a few more examples. Okay, firstly, when you, not today, next time के लिए you draw a factory. Well, you don't have to draw a factory. Factory का account, which is that trading account for the year ended 31st March. उसके आगे 2016, 17, 18 कुछ ना कुछ आ जाएगा. आपको एक पेज के लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करना है. देयर इज नो डेट कॉलम, देयर इज नो LF, JF, कुछ नहीं, बट अ फ्यू आइटम्स दैट यू हैव टू राइट एंड कीप. डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, बिकॉज मैंने ना गोडाउन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया. आई विल डू दैट. परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न, बिकॉज दैट इज व्हाट यू डू. आप फैक्ट्री में माल खरीदते हो और आप फिर प्रोडक्ट बना के बेचते हो, तो वो हो गया सेल्स. इट इज एन इनकम ऑफ द कंपनी. सेल्स इज अ बिग इनकम, अ मेजर इनकम फॉर द कंपनी. सेल्स रिटर्न रहा, कस्टमर ने वापस दिया प्रोडक्ट, तो वो सेल्स रिटर्न है, वो माइनस. एंड क्लोजिंग स्टॉक. ओके, सो राइट नाउ a few scenes that I would want to show, because more than words, many times images have a better impact on your imagination. Okay, so please याद रखना, this is what is to be drawn for a factory record as well as a godown record. Right now what am I doing is trying to impress on your mind what does a factory mean. So factory means a place जहाँ पे above you can see it is potato chips मतलब not the microchip but potato chips manufacturing. place छोटा नहीं है, because factory में इतने बड़े machines होते हैं कि the place has to be very very big. Moving on, few more examples. What you see above is candle manufacturing. Okay, scented candle आते हैं ना. Okay, वो सस्ता कैंडल नहीं होता, काफ़ी महंगा कैंडल होता है. Again, it's a very unique process, it's a very unique product, and it is again कैंडल होता इतना है, but the place where the manufacturing takes place, that is very very big. Above me you see plastic bottle being manufactured. Now plastic bottle में क्या नहीं आता? Everything that used to come from cold drink to alcohol. Okay, maybe जो आता था glass bottle में, because glass is very very fragile, टूट सकता है. प्लास्टिक बॉटल में आजकल, प्लास्टिक कंटेनर्स में आजकल almost everything comes. So that is an example of a plastic bottle manufacturing procedure. Something that many guys may be fond of, what? Speed cars. Okay, so making a car is a very very minute detailed procedure. So many machines, so big machines, and so small holes have to be made in to make sure that the car doesn't has, गाड़ी चलाते वक्त आवाज आती है ना, कीर कीर कुरकुर, नहीं आना चाहिए. मतलब कुछ नट बोल्ट तो बहुत लूज हो चुका है. So I repeat, many cars, big cars require many big, what you call, places. This is manufacturing of an aeroplane. Now an aeroplane is a much bigger thing compared to a car. तो you can only imagine उसका फैक्ट्री जो रहेगा वो कितना बड़ा होगा. दिस इज वन विच मैन्युफैक्चर्स बोइंग एयरक्राफ्ट्स, एंड इन अ मंथ, जितना मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, दे मेक अराउंड इन अ डे 9 एंड इन अ मंथ अराउंड 40 और समथिंग मोर देन दैट. सो दैट इज a lot of big airplanes being manufactured, and this is something which is very dear to us. What? Our mobile phones. So अपना मोबाइल फ़ोन का डिवाइस तो बहुत छोटा होता है, but those mobile phones, okay, have a very what do you call, keen and detailed machinery
because in that small mobile phone so many devices and parts have to be fit into it. I'm really hoping that my audio is decently audible to you besides what is going on above. And these are all examples of factories. उसके अलावा गोडाउन भी होते हैं, फैक्ट्री में इतने प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं दैट उसको कहाँ ना कहाँ पे तो स्टोर करना पड़ेगा. सो दिस प्लेसेस, ह्यूज प्लेसेस, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता यहाँ पे. गोडाउन में बस जो प्रोडक्ट बनाया उसको बॉक्स में पैक किया, उसको बेचने के लिए उन्होंने रेडी रख दिया है. आई रिपीट माई सेल्फ, आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड थ्रू ऑल ऑफ दीज वेरियस क्लिप्स अबाउट दैट एक फैक्ट्री होता क्या है. इन टूडेज एज एवरी कंपनी हैज अ फैक्ट्री. या तो वो फैक्ट्री उन्होंने शहर में रखा है, या उन्होंने गांव में शिफ्ट किया है, या कुछ लोगों ने तो दूसरे देश में ही शिफ्ट करा दिया है. ओके, द वैक्सीन, बिकॉज वी हियर ऑफ वैक्सीन्स everywhere, every day, newspapers, new channels, YouTube, vaccine, vaccine, vaccine. The India is supposed to be, which it is, the largest producer of vaccines in the world. Okay, now Indians have also manufactured a vaccine for COVID-19. Okay, it's manufactured by a company by the name of Bharat Biotech, Covaxin. Okay, Indian made है, completely desi. But पुणे में there is an institute called as SII, Serum Institute of India, which is making Covishield. उन्होंने बनाया नहीं है. It is made by a company, a pharma company, a research laboratory in UK, AstraZeneca. They have given their formula, their nuska to the Pune based SII because उनके पास UK में फैसिलिटी है नहीं इतना. रिसर्च किया उन लोगों ने कि दिस इज हाउ द वैक्सीन शुड बी मेड, बट दे डोंट हैव द फैसिलिटी, तो उन्होंने एक्सपोर्ट करा दिया. एंड इन इंडिया इट इज इन पुणे, नॉट फार फ्रॉम अस. ओके, इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. देयर वाज अ डील, एक डील था कि आप पुणे में बनाओ, हाफ ऑफ योर प्रोडक्शन यू गिव टू अस, हाफ ऑफ योर प्रोडक्शन यू कैन सेल इट इन इंडिया और वेर एवर यू वॉन्ट टू. सो आई रिपीट माई सेल्फ, फैक्ट्रीज आर एवरीवेयर. हर चीज का एक फैक्ट्री होता है. टूडेज लेक्चर, द पास्ट अराउंड 40 minutes वॉज जस्ट टू इम्प्रेस ऑन योर माइंड. आपके दिमाग में मेरे को ये फिट करना था कि फैक्ट्री होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है. वो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया थ्रू दोज वेरियस क्लिप्स. ओके, आई होप दैट माई ऑडियो वॉज decently audible and you could hear what I was trying to say. And very importantly, okay, this is how it will look in accounts, debit में और credit में. When we actually prepare this, from our next lecture to come, you will get a lot better idea. This is just an introduction of the first page of your final accounts solution. सारे pages एक पेज में, एक लेक्चर में कर सकते हैं, but that becomes too much to digest. और अगर कोई चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, ओके, देन तकलीफ होगा अगले दिन पे सुबह. मेरे को वो तकलीफ नहीं देना है आपको. ओके, सो आई डोंट वांट एनी इश्यूज जहाँ पे हाजमोला की ज़रूरत पड़ेगी. नहीं, जितना बोला उतना आपने सुन लिया और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ये समझ लिया है. आज के लिए ये कहानी, well, the story, I'll keep only this much. Please do remember, normally the PDF is available, but today there is no question and answer thought. But whenever a question and answer is explained to you, the PDF of the question and answer and of the entire chapter will be available in the description below, as well as it will be shared later on the Telegram channel. You can always download it from there and keep it for your future reference purposes. If this much, at least if till today आपने कभी सुना नहीं था फैक्टर के बारे में या इतना ध्यान नहीं दिया था फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर के बारे में, बट यू डिड अंडरस्टैंड, यस सर अभी फैक्टर के बारे में मुझको कुछ आता है, मैंने देखा है, आपने जो दिखाया है, एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस. माय रिक्वेस्ट इज़ कि आप प्लीज़ ये लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिए. दूसरा, ये लेक्चर को शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, सो दैट मोर एंड मोर पीपल गेट कनेक्टेड और अपनी ये गाड़ी में वो सवार
हो सकते हैं. I'll do my best कि बाबा जो गाड़ी चलाने का काम मैं कर रहा हूँ, because I am the driver here, I will drive it safely. No risk taking business for me. कोई डाउट रहेगी, you can always put it in the comment section. We will do our best to address it at the earliest. For today, this is it for me. This is Steven sir. This is a goodbye from me. Take care of yourself. Immediately in our next lecture, we will be solving the trading account specifically, so that you know exactly in the debit क्या लिखना है, क्यों लिखना है, in the credit क्या लिखना है और क्यों लिखना है. Okay, तब तक के लिए do take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely family members. I will meet you very, very soon. Have a wonderful day ahead. God bless and protect all of you. Bye for now.